एक सेंसिबिलिटी मेंटेन करके रखनी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हाथ में आपके त्रिशूल है। आई थिंक इस रोल के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्टर इतना फिट होता जितना ये फिट होते हैं। Create something new, execute it in a different way. That's why in Shivaya also and in this also people say there are shots which they really don't know how they must have been taken. अजय जी, आपको भोला कब लगते हैं? जब ये डायरेक्शन में होते हैं या एक्टिंग कर रहे होते हैं? कभी नहीं। कभी नहीं। वैसे तो ये हमेशा भोले ही लगते हैं ऊपर से, लेकिन ये है नहीं, समझे? हाय तब्बू। मैं क्या कहूँ, जाने दो, इन्होंने कह जाने दिया ही मैं दो। नहीं हूँ, जाने दो। हाय तब्बू। तब्बू, आपने एक्शन की बात की है, तो एक्शन के लिए कितनी तैयारी की यहाँ पे, क्योंकि काफ़ी अलग दिख रही हैं आप यहाँ पे एक्शन करते हैं। मैंने ऑनेस्टली कुछ तैयारी नहीं की। जो कुछ किया अजय सर ने और सारी एक्शन टीम ने मुझ पे मेहनत की और एक्चुअली मेरे लिए बहुत आसान बना दिया, क्योंकि एक्सपर्टीज़ जो इन लोगों को है एक्शन में, आई डोंट थिंक किसी और को है। तो मुझे वही करना था जो मुझे इंस्ट्रक्शन मिलते थे और मैं अंधाधुंध कर जाती। सो रियली but I knew that I wouldn't have to prepare because whatever I do, it will be less than what I would be required to do on this film. अजय, आपके लिए त्रिशूल से एक्शन करने का कैसा अनुभव रहा? I think it's very interesting. थोड़ा मुश्किल भी था, थोड़ा नयापन भी था उसमें, तो डिज़ाइन भी करना था, उसको एग्जीक्यूट भी करना था और उसको परफॉर्म भी करना था। तो आई थिंक इट वाज वेरी नाइस और एक सेंसिबिलिटी मेंटेन करके रखनी थी, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के हाथ में आपके त्रिशूल है। हेलो अजय सर, टुवर्ड्स योर लेफ्ट, ऊपर। या हाय अजय सर, फर्स्टली ग्रेट ट्रेलर। आई वांटेड टू आस्क यू दैट फ्रॉम यू मी और हम टू भोला, what is the evolution of yourself you have seen as a director, the changes you have observed? I really don't know. I mean, you grow every day, and you learn from your mistakes, other people's mistakes, other people's good work, your own work, and you can't pinpoint a thing, but you keep growing and you keep learning. Ajay sir, this side, hi. This is Saurabh, hi, from News Nation. सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत अच्छा ट्रेलर है और 3D में विजुअल ट्रीट आपने दी है सबको। और क्वेश्चन पूछने से पहले हर हर महादेव, जिस तरीके से आपने इसको शूट किया डिवाइन नगरी में, जब भी आप जाते, क्योंकि आपको बहुत देखा जाता है वहाँ पे, और जिस तरीके से आपने भस्म लगा के, इंटेंस आपकी आंखें तो हैं ही, और आपकी इंटेंसिटी ने भी एक जो विजुअल ट्रीट हमें अभी 3D में दिया है। सो तब्बू जी, आप कैसे देखती हैं इनकी इंटेंसिटी को? और क्योंकि आंखें तो इनकी है ही, और जिस तरीके से भस्म लगा के, कैसा अवतार अजय सर का आपने देखा है जो अभी 3D में हमने भी देखा है? आई थिंक इस रोल के लिए मुझे नहीं लगता कि कोई और एक्टर इतना फिट होता जितना ये फिट होते हैं। और आई थिंक इनका जो एक सारा इमेज और इनकी जगह है वो ख़ास तौर पे डिफ़ाइन होती है इंटेंसिटी से। इसका ये मतलब नहीं कि ये दूसरी कैरेक्टर्स को उतना सूट नहीं करते, लेकिन जैसे ये हैं, जैसे ये रियल लाइफ में भी है, तो उन्होंने कैरेक्टर्स भी ऐसे चुने हैं और वो उनकी बहुत स्ट्रॉन्ग पहचान है और बन गई है, ये इतना मैं कह सकती हूँ। Ajay sir, here sir. So sir, this film is a remake of Tamil film Kaidi. Whether you had any opportunity to interact with director Lokesh on changes should be made or No, not really, but through people we've been in touch, and we are discussing a few things for the future also. Thank you. Hello. Sir, Sumit Krill from Kolkata Media, sir. Sir, while making this film, आपको acting या direction, which process you enjoyed the most? You enjoy the process of working. You can't segregate between acting and direction because it's all one. You enjoy in totality filmmaking. You enjoy waking up in the morning, going to work, and both are a part of it. So it's a combination. You can't enjoy one without the other and the other without the previous one. Thank you. Hello, Ajay sir, right at the center. Hi, thank you.
Yeah, I had to ask you, after Shivai, which was already quite a benchmark when it comes to action, because we saw that, you push limits, and here we see the limits are pushed even harder in the best way possible. Something that comes to you so naturally, thanks to your father, it's probably something you design. But here, Sarah, there are some practical stunts which really look absolutely crazy. It seems impossible to be even humanly impossible. So, what was the thought process behind it? Was it something you went to the drawing board and consciously you had to make those action pieces? See, A for one, the first thing when I make an action film, my biggest first attempt is, without naming, I would say most of the films I see in our country, they have fabulous action, but they're always inspired, or you can have a resemblance to some sequence of an Hollywood film or a European film, or some film or the other. So. Especially when action is concerned, my whole intention is that create something new. Create something new, execute it in a different way. That's why in Shivaya also and in this also, people say there are shots which they really don't know how they must have been taken, and then plan it. And then I mean it's a whole process, but it starts basically with we need to create something new, our own, and keeping it stylized, but keeping it very, very Indian. Not westernizing it completely. Hi Ajay, Tabu, this is Komal from Indian Express. Since this is an action film, out and out action, we saw so much happening on the screen. I want to understand from you, what are the safety measures you take on set? Because even this morning, Mr. Bachchan shared that he had an accident too, and we hear that quite a bit. So, what are the safeguards? Look, it's like our job is difficult and easy also, I would say. Mr. Bachchan, from where he started, and then later when we started, at that point of time, we used to do action. There were no mattresses, there were no safety measures, there were no cables. We've injured every part of our body. Mr. Bachchan has done shots which you can't even imagine. I remember him getting injured during we were doing Major Saab also, which he insisted we had to jump from something. It must be 30 feet, 3 floors high, and I told him, let's not do the shot. It's a night sequence. I mean, we can work it out with duplicates, and we both were supposed to jump together, and he insisted, let's do it, and he had an injury then also. So it's that enthusiasm. But now I would say. Now things are much more easier. I think there are cables, there are a lot of safety precautions. There are ambulances on set, there are doctors on set, there are paddings and lots of stuff. So it's become relatively much easier, thank God, because while we are aging, things are getting easier also. Yeah, so there is a lot of it. It's like, it's like also driving a car. I mean, you can have an accident any time, but you try to be safe all the time. So it just happens sometimes. We try to take all the safety measures, but there are risks to it, definitely. Tabu, is it scary though? Well, if you think about it, it is. There's always 1% chance of you getting injured. And actually, in fact, even before you asked this question, I wanted to maybe conclude whatever by thanking my entire action team for keeping me safe, for keeping everybody safe. And this is exactly what I wanted to talk about, that it's really, really not easy to execute an action film. It's not easy to physically achieve so much and do so much and just do it actually there in real time. You need a set of really dedicated people and who care about people's lives, who will protect you and make you do the right things, and not make you do what you should not be doing. And I had a fantastic team, and I want to thank each person of that team. Yadavji, Suri, our team from overseas, Rama, him, most importantly, everybody who did the cabling, and people who were our body doubles sometimes. So yeah, it is scary, but now my fear has really reduced by a huge percentage. I enjoy it now. Ajay, Ajay there's a sir, question. this is Ravi from ABP News. अजय सर, चूंकि बच्चन जी की इंजरी की बात हो रही है और आपने भी बताया कि पहले कैसे
जो सुरक्षा के जो मानक थे, जो स्टैंडर्ड्स थे, वो काफ़ी लो थे और अब हाईटेक चीज़ें आ गई हैं। आपका भी करियर 30 साल पुराना है, 30 साल से ज़्यादा समय से आप काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन एक्शन फिल्मों में आपने काम किया। कभी एक्शन करते हुए कोई ऐसा मौका आया जब आप काफ़ी खुद डर गए हों, क्योंकि आपने भी जब 90s में काम किया था तब भी इतने हाई स्टैंडर्ड्स नहीं थे? डरने की बात नहीं है, लेकिन काफ़ी हड्डियां बॉडी की टूटी हुई हैं और काफ़ी इंजरीज हैं, और अब रोज़ सुबह जब उठते हैं तो वो ये सब याद आती हैं जब दर्द होती है तो है, बट एज आई सेड इट्स पार्ट ऑफ द गेम. Hello, Ajay sir. To your right here, please. Thank you for an excellent trailer. Wanted to know how difficult or different the production process was to bring out this movie in IMAX. Yeah, so A for one, you have to plan it. You have to shoot it according to 3D. There's a different technique to it, and then it's a whole process. And then the whole team comes in from IMAX, and they do a fabulous job. And the visual they create is outstanding. तब्बू जी यहाँ पर या हाय मुझे ट्रेलर बहुत अच्छा लगा। अजय जी बहुत ही सुंदर बना है आपने। यहाँ तब्बू जी आपसे जानना चाहूँगी, जनरली दिखाया ये जाता है कि महिला पुलिस, जितनी भी महिला पुलिसकर्मी घायल नहीं होती हैं, थोड़ा सा काम करके निकल जाती हैं, लेकिन यहाँ पर शायद बहुत ही कम ऐसा मैं मौका गिन सकती हूँ उंगलियों पर कि जहाँ पर महिला पुलिस को भी दिखाया गया कि वो घायल है। इस ट्रांजिशन को कैसे लेती हैं? बहुत सटल सा एक मैसेज देता है। मैं बहुत प्राइड फील करती हूँ इस कैरेक्टर को लेके, और द फैक्ट दैट आई वाज चोजन फॉर दिस रोल मुझे बहुत गर्व है, और मेरे लिए ये बहुत बड़ा स्टेप अप है, प्रोग्रेस है मेरे कैरेक्टर्स में। एंड जैसा आपने कहा, जैसा हम महिला अफसर को देखते हैं और महिलाओं को देखते हैं और ये सिर्फ ज़ख्मी नहीं होती, बल्कि ज़ख्मी होने के बाद भी इनफैक्ट पूरी फिल्म में मैंने एक स्लिंग पहना है, इसलिए मेरे लिए ये एक्शन और भी ज़्यादा चैलेंजिंग था, क्योंकि मेरे पास अपने दोनों हाथों का सपोर्ट नहीं था एक्शन करने के लिए, भागने के लिए भी। तो ये कैरेक्टर एक्चुअली ओरिजिनल में मेल एक्टर नारायण राम सर ने किया था, तो उसको चेंज करके इन्होंने महिला कर दिया। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब प्राउड मोमेंट है, मैं कह सकती हूँ। शुक्रिया। Ajay, I've got a question here, a little on the right hand side, bottom. Hi, Ajay. Ajay, so last year when Drishyam 2 came, so before that Brahmastra was the last big success and it was a long wait, and then Drishyam 2 came and it turned out to be a blockbuster. Now this year again it has been a wait for a very long time, for last few weeks, that a new film comes and does some great business, and a lot of expectation is out there on Bhola to do well. So how are you looking at that as an industry person, as someone who has been there for 30 years as a producer? I don't know. Right now, I'm not thinking about release. I'm thinking about concentrating and finishing on the quality of the film. Because, you know, the post-production, little bit of tweaks or whatever's left, we are doing. So I don't know when I'll start thinking about the release. But yeah, we just had Pathan, which did That's right, yeah. fabulous business. I mean, extraordinary business. So just fingers crossed that all the next releases would do very well, and then Bhola will come and also do very well. Absolutely. That's the expectation. Thank you. Hi, Ajay. Hi. Hi, Ajay sir. On your right. On your right. Here. Samir here from Movie Talkies. So, you know, a lot of people have guessed here, might have guessed here that, you know, Abhishek Bachchan is a part of Bhola, but you have kept him as a secret as of now, Abhishek Bachchan. So, can you please spill some beans on it? If you think I've kept it a secret, do you think I'll give you an answer? No, but I'm just, that's what I'm asking. Can you please, like, So you know, why are you asking? Right? Yeah. So, can we expect some more surprises? I don't know. You see the film. Surprises means you don't ask. You see, you get them. Ajay, hi. I want to ask you. Hi. I want to ask you, what are the creatively, what have you explored the changes in the Hindi remake as a director? There are a lot of changes. When you see the film, I mean, we'll talk about that. The characters have been changed completely. The base idea is similar, but otherwise you would see the whole treatment, the way the world is completely different, The emotion is completely different. So whatever I felt should be different for me, I've done that. Tabu, I want to ask you, we meet a lot of female actors these days for last many years. They want to do solo action. They want to do a lot of action movies. Have you ever thought about it? Did you ever think in the past? That's the problem. When they think about doing solo action, you can't fight with mid-air, na? You have to do action with somebody or the other. You can't think about doing solo action. Being the main protagonist as an action.
मैं ऐसा कभी सोची नहीं हूँ, लेकिन इसमें जो किया है आई डोंट थिंक मैंने कभी सोचा था कि मैं इस लेवल का एक्शन कर पाऊंगी, एंड आई वांट टू थैंक हिम फॉर दैट. Hi, Deepak sir. Deepak sir, on your right. Yeah, yeah. Hello. Sir, you have worked with Ajay Devgn sir, before, but this time it's, quite intense action. So how was it, facing him off, like on the camera? नहीं, उनके साथ हमेशा इंटेंस रोल ही मिलते हैं मुझे. ओमकारा में भी इंटेंस था, ये भी इंटेंस है, तो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहता है और काफ़ी एक अलग, मतलब वो लॉन्चिंग थी मेरी, ये री लॉन्चिंग है, ऐसा मान लो. तो जी हेलो सर, दिस साइड. सर मैं विनीत जी से पूछना चाहता हूँ कि उनको आपके साथ रोल करके कैसा लगा, क्योंकि आपकी पहली मूवी ऐसा लग रहा है. अजय जी के साथ काम करके कैसा लगा है? इन्होंने बहुत साल पहले मेरे साथ काम किया था, कच्चे धागे, उसके मेन विलन थे ये. बहुत सालों बाद हम काम कर रहे हैं साथ में. इसका जवाब तो उनको मिल ही गया, और ये सवाल मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है जैसे कि बच्चे से पूछा जाए कि खाना कैसा लग रहा है. अच्छा ही लगेगा. All right, we'll just take one last question. Can we give the gentleman the mic? Yes. Mayur, आइए. Thank you, Nitin, firstly, and congratulations to the team. The trailer. So, center. सबसे पहले तो जय भोलेनाथ सर. जय भोलेनाथ. सर, भोला की बात हो रही है तो जाहिर है, आई थिंक एक मेरे कलीग ने लोकेश कनगराज का नाम लिया, और उनकी मैंने दोनों फिल्में देखी है, कैथी और विक्रम. तो जो मेरा एक अनुभव एक बतौर दर्शक, ना कि सिर्फ जर्नलिस्ट, वो ये रहा है कि ये दोनों फिल्म एक्शन है, जो मेरा एक पर्सनल फेवरेट जॉनर है. बट इन दोनों फिल्मों की जो आई थिंक खूबियत है, और जो शायद भोला में भी रहेगी, कि कैसे जो उसकी प्राइम कहानी है वो एक फैमिली स्टोरी है. जैसे इसके अंदर एक बाप बेटी की, मैं पहले भी कहना चाहता था कि जब आप ट्रेलर देखते हैं तो हम ज़्यादा कहानी खोल नहीं सकते. हाँ. तो इसलिए आपको एक्शन ज़्यादा नज़र आ रहा है. फिल्म में एक्शन बहुत है, लेकिन जो एक्शन, कोई भी एक्शन बिना किसी इमोशन के वर्क नहीं कर सकता. तो द मेन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द फिल्म इज इमोशन, और जो कहानी है. बल्कि इसमें और ज़्यादा ट्रैक्स ऐड है, तब्बू के भी ट्रैक्स एडेड हैं जिसमें एक अलग इमोशन है. सो हमेशा जब आप एक कहानी सोचते हैं तो उसका इमोशन पहले सोचते हैं. अगर आपके पीछे एक इमोशन हो, आप किसी को मारे हैं तो लोगों को मज़ा आता है, वो सीटी ताली मारेंगे. अगर बिला वजह आप किसी को मारेंगे तो आई थिंक किसी का कोई रिएक्शन नहीं आएगा, चाहे वो कितना भी अच्छा एक्शन हो. तो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है कि आपका इमोशन सही है कि नहीं, और आपका दिल अपनी सही जगह पे है कि नहीं. और मेरे ख्याल से यही इमोशन जो है, मतलब जो ना सिर्फ मास ऑडियंस बट फैमिली ऑडियंस को भी आकर्षित करेगा इसी फिल्म. आई थिंक देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन मास एंड फैमिली ऑडियंस वेयर इमोशंस आर कंसर्न्ड. इमोशन एक यूनिवर्सल इमोशन होता है, चाहे वो हिंदुस्तानी हो, चाहे वो अंग्रेजी हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो. इमोशन हमेशा सेम ही होता है. एक बाप का बेटे के लिए, बेटी के लिए इमोशन, एक माँ बाप का फैमिली के लिए इमोशन, बच्चों का अपने पेरेंट्स के लिए इमोशन, जो भी इमोशन आप ले लें वो सब एक ही होते हैं, यूनिवर्सल है. थैंक यू सो मच. भूषण जी के लिए एक सवाल. भूषण जी, 3D फिल्म सब इंडिया में फ्यूचर कैसा देख पा रहे हैं? पहले बहुत कम बनती थी, धीरे धीरे शुरू हो रही है. इंडिया में इसका फ्यूचर कैसा पा रहे हैं इंडियन सिनेमा में? फ्यूचर तो 3D फिल्म्स का, आज तक जितनी भी फिल्में 3D आई हैं वो आपने देखा ही है, बिजनेस उनका बहुत ज़्यादा होता है. तो लाइक तानाजी वाज आर, मतलब लास्ट जो हमने साथ में फिल्म की थी तानाजी, उसका बिजनेस 3D का अगर आप देखें तो इट वाज वेरी बिग बिजनेस. मतलब 60-65% का बिजनेस 3D से आया था. तो आई थिंक 3D फिल्म अगर करेक्ट तरीके से हो, जिस तरीके की भोला की क्वालिटी है, तो फ्यूचर इज देयर. थैंक यू. Thank you so much, ladies and gentlemen, for being here. एक बार जोरदार तालियां हो जाएं for this amazing team here. Thank you. Well, before we move on to the final photo op, it's only fair that we, invite on stage or this platform some very important people, जिनके बिना शायद ये पूरा नहीं हो पाता. The co-producers of this movie. Give it up for Mr. Kumar Mangat Pathak, ladies and gentlemen. जोरदार तालियां Panorama Studios से. Of course, Mr. Vikrant Sharma, उनके लिए तालियां. And I would like my whole team here, please.
All the technicians, please, come on, come on, come on, guys. All right, the cinematographer of this movie, Asim Bajaj sir, is here, of course. Costumes, Radhika Mehra, Naveen Shetty and Divyang D'Souza ki. Action director, R.P. Yadav ji and Ramzan ji. Ramzan sir is not here. Writers, ladies and gentlemen, Amil, Sridhar, Sandeep and Ankush. Of course, NY VFX wala ko special thanks. And the editor, Dharmendra Sharma ji. Ek baar zordar taaliyan ho jaye. Of course, the entire crew is not here. But yes, the good wishes are always with us. This is Bhola. Thank you so much. Thank you so much, gentlemen, ladies. Thank you so much.